Give it up for Katie, everyone. I think what I loved about that performance was that she's a first-time performer here, and this is your first open mic ever, right? This is your first open mic. I remember my first. I was shivering on stage. I mean, that deserves a round. I really like this about first timers. You know, they come on here. A lot of them have just surprised me by going, this stage is mine. हो गया, तुम लोग बैठ के सुनो, मुझे चीजें बोलनी है. On that note, तुम लोग बैठ के सुनो, मुझे एक चीज बोलनी है. So, I have written a poem too. I write poetry too, actually. I've not written a poem too. I write poetry too. And this is a little something that I just wanted to share with all of you. For someone who's a writer, I sure as hell don't write that much. I muse and love and sing and love. I confuse myself with chaotic career shifts and unstable relationships. One day I am a corpse in the dead ground, and on the next I am a titan, enraged and broken free of her imprisonment. I can't tell normalcy from inadequacy, or stagnation from peace. I trade questions for opinions and brand my search as one for the truth, as though it exists, as though the truth were a daisy I could pluck out of a field and decorate my hair with, and was not instead the wispy harbinger of a storm sailing through a once blue noon, bringing in its wake that unsolicited awakening. As if the truth were a thing to hunt and not cower from. And so I ask myself if I should write more and ponder less. You know, become one with this world, the same as these stones, cold, loud, and thoughtless. Thank you. A little bit about writing and why I write and why sometimes I don't write. With that in mind, how many of you are, currently writing seriously? You want to, you either want to release a book or you want to get published or you want to start NFT poetry. How many of you are doing that? How many of you are there in that space? Seriously, because I have all the intention but not the actions. So, see, that's a very good point. What I mean by seriously is that you have the intention. You just have the intention for it. That's enough. Yeah? Yeah? I want to talk a little bit about what you all do so that we can kind of have a bit of a knowledge sharing session. I'm sorry, this is the corporate in me. So we can have a bit of a discussion around that. Sorry, your name? Nawaz. Yes. Okay, and will you be reciting for us today? Yes. And you are here with? Hussain. And Nawaz and Hussain, you are here together. Your friends, all right, great. I love how many friends are here. You know, just amazing. It's platonic support is the best. Okay, Nawaz. So when you do come on, when I do call you on board, we will talk a little bit about, after you go back, of course, we'll talk a little bit about what you want to do with your writing. And I don't mean to put you on the spot. If you don't want to talk about it, tell me to shut up. It'll be fine. I'll move on to the next person. It's okay. But yeah, having said that, the next person who is coming on board, I have forgotten. Jimisha? Jinisha, right? Jimisha, okay, give it up for Jimisha. She's the first time performer, guys. Energy. I want the energy. Hi guys. Hi. Hi. Yeah, thanks. So I'm from Kalyan. Do you guys know where Kalyan is? Unfortunately, yes. Yes, thank God. Just a second. Okay. बस तो इतना ही बोलना था. अभी मेरी poems बोलेगी तो ज़्यादा अच्छा है. Okay.
अगर समंदर और समंदर के किनारे की रेत की प्रेम कहानी होती तो कुछ इस तरह होती। रेत, यूं उछल उछल के आती हो तुम मेरी तरफ कि लगता है हमेशा आज तो हम एक हो ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ छू के चली जाती हो तुम। इतने पास है हम, लेकिन फिर भी तुम मिलती नहीं मुझको। लोग आते हैं तुमसे मिलने, अपने पैर साफ करते हैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन तुम उनकी गंदगी भी अपनी तरफ खींच लेती हो, फिर भी तुम इतनी साफ कैसे हो? और फिर जब तुमसे मिलने के बाद घर जाते हैं वो लोग, तो मैं तुरंत उनके पैरों पे चिपक जाता हूँ, चिपक कर तुम्हारा स्वाद लेता हूँ। सुनता हूँ लोगों से कि तुम बहुत नमकीन हो, पर सच कहूँ तो मेरे लिए तुम सबसे मीठी हो। मुझ में वो ताकत नहीं कि उछल कर आ सकूं और तुमसे लपेट जाऊं, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर है तुमसे कि जिस दिन पहुंच गई तुम मुझ तक, यूं पकड़ लूंगा तुम्हें कि मेरा रंग भी तुझ में मिल जाएगा। तुम्हें ऐतराज तो नहीं होगा ना? तुम मैली हो जाओगी ये ख्याल तो नहीं आएगा ना? जिस दिन आओगी मेरा सूखापन भी ले जाओगी। यूं लगता है कि भगवान तुम ही तो नहीं। मानता हूं इंसान तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी सपने देखता हूं कि एक दिन अपनी प्रेम कहानी भी अमर हो जाए। इतनी अमर हो जाए कि लोग पूछे एक दूसरे से कि तुम्हारा प्यार रेत की तरह है या समुंदर की तरह। इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, पर एक ही उम्मीद है कि जब भी आओगी तुम्हारे सुख देके मेरे सारे दुख ले जाओगी। सच कहो ना, इतनी प्यारी कैसे हो तुम? सच कहो ना, इतनी प्यारी कैसे हो तुम? थैंक यू। सो द नेक्स्ट पोएम इज अबाउट आवर बेस्ट फ्रेंड, जो है आंसू। आंसू कहते हैं, निकाल दिया तुमने फिर मुझे अपने घर से। तुमको मैं वहां सूखा अच्छा नहीं लगता क्या? मानता हूं मैं कि मुझे निकालकर अक्सर लोगों को हल्का लगता है। अरे पर मेरे बारे में तो कभी सोचो। आजकल तो रोज ही निकाल रहे हो। अब तुम्हारा मेरा बहुत गहरा नाता है, इसलिए मेरे दोस्त खुशी से वार्तालाप चालू है मेरे। कहा है मुझे उसे लौट आने के लिए तुम्हारे जीवन में, पर भाई अब तो मुझ पे रहम करो। तुम्हारे तकिए पे जा जाकर थक चुका हूं मैं। तुम्हारे गालों पे सूख के अकड़ा हुआ सा महसूस होता है। एक ही दुख के लिए बार बार निकलते हो यार तुम मुझको। अरे मुझको भी थोड़ा वैरायटी तो दो। बहुत कोशिश करता हूं मैं तुम्हारे आंखों से ना निकलने की। कई बार तुम्हारी आंखों में फैल जाता हूं। सोचता हूं कि आज तो नहीं निकाल पाओगे, पर तुम हो कि जीत ही जाते हो मुझसे। लेकिन एक सवाल रहा है तुमसे। अरे जब मुझे निकालना ही है तो अकेले में क्यों निकालते हो? दुनिया के सामने कब अपनाओगे अपना ये रिश्ता? अगली बार जब आऊंगा मैं तो जवाब जरूर देना। चलो अभी तो तुम्हारे गाल तक पहुंच गया हो, अभी पोंछ दो मुझे। मुझे तो सिर्फ मेरे घर में ही सूखा रहना पसंद है, तुम्हारे गाल पर नहीं। थैंक यू, थैंक यू। Once again, guys. You're supposed to clap until the stage is occupied by the next person. All right? That's exactly what we do. First time performer again, guys. I think that it deserves an applause. I'm sorry. I really loved the piece about tears, and how you commented on shedding them only in solitude. Naughty khade ho gaye. That was lovely. I think that's so common. Very good. Great piece. Okay. How many of you are excited to go on next? No? Nobody. Come on, if you want to go on next, give me a shout. Yes. Yes? This is not gonna work. I need a bit more energy. If you want yourself or somebody you're here for to go on next, give me a nice round of applause. That's more like it. The next person I want to call, I don't think is a first time performer, because I did not see a star next to his name.
This is how we communicate with each other. If there's a first time performance, so they get a little more encouragement. And I'm babbling for too long, so I'm just going to call the next person. Faisal. I want you to keep clapping until you get in. Keep clapping, keep clapping, keep clapping. Not a first time performance, but I think after COVID, like I'm coming after like after 3 months or something. Like, but Habitat used to be our home basically. It's been 6 years that we've been performing, and yeah, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ. कितने लोगों को उर्दू समझती है? Like I'm very scared today, like to sort of go ahead with. I know, like few of you, but then these sober students, yeah. Might okay. अच्छा, you are here. I was waiting for you actually. Thank you. तो एक शेर से शुरुआत. अफसुर्दगी, कितने लोगों को पता है अफसुर्दा का मतलब क्या होता है? ओके. अफसुर्दगी बेसिकली उदासी को कहते हैं. इट्स अ पर्शियन वर्ड. तो एक शेर है कि दिल की अफसुर्दगी से परेशान शख्स, दिल की अफसुर्दगी से परेशान शख्स खुदकुशी गर नहीं करता तो क्या करता? खुदकुशी गर नहीं करता तो क्या करता? एक गज़ल के 3 शेर और उसके बाद एक नज़्म. आई थिंक 500 बार परफॉर्म करने के बाद भी तुम्हारी फटतियाँ हैं यहाँ के. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तेरी खुशबू को अपने जहन में एक घर दिया मैंने. तेरी खुशबू को अपने जहन में एक घर दिया मैंने कि अपने आप को गुलशन से तन्हा कर लिया मैंने. कि अपने आप को गुलशन से तन्हा कर लिया मैंने. वुसात कहते हैं वास्टनेस को, कि मेरे इश्क की वुसात तुम्हारा दिल न समझेगा, कि मेरे इश्क की वुसात तुम्हारा दिल न समझेगा, कि अपने आप को दरिया कभी सहरा किया मैंने, कि अपने आप को दरिया कभी सहरा किया मैंने. और तुम्हें उड़ना था सो मैंने मोहब्बत तर्क दी अपनी. तर्क करना मतलब छोड़ देना. तुम्हें उड़ना था सो मैंने मोहब्बत तर्क दी अपनी, मगर ये पूछता हूँ क्या अच्छा किया मैंने, मगर ये पूछता हूँ क्या अच्छा किया मैंने. और उसके बाद एक तरनूम में सुना था. एक्चुअली नज़्म इज़ वेरी I was really shocked to see you here. It's like what Delhi people are doing here. Yeah. शब हिजर कहते हैं नाइट ऑफ सेपरेशन. हिजर इज सेपरेशन, शब इज रात, तो सेपरेशन की रात. वो शब हिजर हमें फिर से मनाने आए, वो शब हिजर हमें फिर से मनाने आए, वो शब हिजर हमें फिर से मनाने आए, जैसे फिर लौट के गुजरे से ज़माने आए, जैसे फिर लौट के गुजरे से ज़माने आए. और मुझको ना मौत न दौलत न जवानी का ख्याल. बिस्तर मर्ग एक और लफ्ज़ है, इज़ डेथ बेड. बिस्तर मर्ग. मुझको ना मौत न दौलत न जवानी का ख्याल, मुझको ना मौत न दौलत न जवानी का ख्याल, बिस्तरे मर्ग पे बस याद फसाने आए, बिस्तरे मर्ग पे बस याद फसाने आए. और दरो दीवार का मतलब तो पता ही होगा, मुद्दत वक्त को कहते हैं. तो जस्ट ट्राई टू गेज और अंडरस्टैंड दिस वन कि बाद मुद्दत दरो दीवार ने देखा सबको, बाद मुद्दत दरो दीवार ने देखा सबको, बाद मुद्दत दरो दीवार ने देखा सबको, बेचने ही को सही लोग पुराने आए, बेचने ही को सही लोग पुराने आए. तो बहुत शुक्रिया.
I have time, I think, so I can go ahead with. लम्स कहते हैं टच, फिजिकल टच को. तो लम्स बाकी है मेरे जिस्म पे जिसका अब भी, लम्स बाकी है मेरे जिस्म पे जिसका अब भी, ना तो वो शख्स रहा ना कोई तस्वीर उसकी, ना तो वो शख्स रहा ना कोई तस्वीर उसकी. और कैसे पढ़ता मैं भला तेरे ख़तों को आखिर, कैसे पढ़ता मैं भला तेरे ख़तों को आखिर, ना तो वो प्यार दिखा ना कोई तासीर उसकी, ना तो वो प्यार दिखा ना कोई तासीर उसकी. और वो ये कहता था कि ख्वाबों में मिलूंगा तुमसे, ताबीर कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम. तो वो ये कहता था कि ख्वाबों में मिलूंगा तुमसे, ना कोई ख्वाब दिखा ना कोई ताबीर उसकी, ना कोई ख्वाब दिखा ना कोई ताबीर उसकी. खलवत इज़ अ वर्ड फॉर प्रॉक्सिमिटी इन उर्दू. उसकी खलवत की किताबों में बहुत लोग थे और, उसकी खलवत की किताबों में बहुत लोग थे और, हमने सोचा था कि हम ही तो हैं तकदीर उसकी, हमने सोचा था कि हम ही तो हैं तकदीर उसकी. और आखिरी शेर के इश्क में बांट गया वो तो कफन भी अपना, इश्क में बांट गया वो तो कफन भी अपना, मैं ही एक फ़र्द बचा हूँ जो है जागीर उसकी, मैं ही एक फ़र्द बचा हूँ जो है जागीर उसकी. थैंक यू सो मच. I think another round of applause. Well done. So there's a thing, उर्दू पोइट्री का एक अलग इम्पैक्ट होता है. And I mean, right? But for any future Urdu poets over here, I would just like to inform the audience कि अगर आपको अच्छा लगा तो स्नैप, अगर आपको और बुलवाना है कवि से तो इरशाद, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग फैजल. मेरा मुकर्रफ 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 मुकर्रर. देख, मैं अंग्रेज पैदाइशी कलोनियल हैंगओवर है मेरा, आई एडमिट इट राइट नाउ. ठीक है, तो मुकर्रर. एंड इफ यू वांट देम टू स्टार्ट आफ्टर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर वर्क, इरशाद. एनीथिंग एल्स? हो गया? Don't snap for us. Don't snap, clap. Don't clap for Urdu poets. Speaking on behalf of all Urdu poets is an English poet. That is how it goes in the world. But okay, very well done. That was lovely यार, मुझे बहुत पसंद आया आपका आपके शेर सुन के, बहुत अच्छा लगा. बट एक चीज़ पूछनी थी आपसे. since you do a lot of SEO and वेबसाइट का आप कंटेंट मैनेज करते हो, क्या डू यू डू दिस फॉर योर सेल्फ एज वेल? अपने पोइट्री के लिए भी आप करते हो ये कहीं? डू यू हैव like every new piece or like ghazal that you write or that comes to you basically, because we don't write ghazals. It's an improvisation in itself. So you don't like write it consciously, but every time that you write is a improvised version of that, like the previous one. Correct. That's how you do it, but it's not a conscious process. Because the moment you make it conscious, you are going to, I think, stuff word and everything, which is like against SEO. So typically, it goes the same way. That don't Google words and everything and just try to plug it in or put it in, so that it goes waste. So that brings me to a very interesting thought. Now, a lot of us poets out here struggle with getting people to actually read our work or listen to our work, which is where a place like Habitat is so important for us to come and talk about what we do. But if you suppose, how important do you think it is, मतलब a social media presence for a poet? चाहे वो उर्दू पोइट हो चाहे वो इंग्लिश पोइट हो, वो कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? Yeah, I think it's very triggering. Very triggering. Sorry. No, like I missed out on that in 2017 and all my counterparts like Mohammad Sadiwala, Gaurav Tripathi and everything are the league. But then, I think my parents were not allowing me that time, to go out and perform and all that thing. And I missed out on that timing, basically. So I think one thing about entertainment industry, or you like as such, like when it comes to poetry and comedy, one thing which is very important is your presence. Like you need to be there. Bhale hi tum perform karenge to nahi aa rahe ho, but come just to show your face and the people remember you.
Like when they're curating stuff, they know that this person exists. Yeah, so that's very important. That's what I'm doing here. I'm just a student. Yes. Absolutely. बहुत good. ठीक है यार. I'm just here to take notes because this is my first time hosting at the Habitat. And thank you. Thank you. And you know what? We'll keep this discussion open. We'll keep this discussion open about, you know, what you can do more for your work, be it on Instagram, be it on Twitter, wherever. So yeah, thank you for that input. With a nice round of applause, please let's call our next performer. More energy. I need some more energy. Little more. I can't. Give it up for Nawaz. I didn't fall. Come on, Antashi, we should just गोइंग आफ्टर फैजल इज लाइक मतलब छोड़ दो ना, ख़त्म कर दो, क्या ही बचा है. ठीक है. सो माय नेम इज़ नवाज. आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड एन अस्पायरिंग पोएट, आई थिंक. And this piece has a slight mention of death, so a trigger warning. So it's called Death by Time, okay, and you will realize why I call it so. Death by Time. Love steps out to break the news to every emotion in the room. She's no more. A deafening silence cruises. Anger lost his favorite host, and love gained her most important project. Poise and grace stood to their essence, not muttering a word. Love got an autopsy done. Cause of death, growth. They say keep growing and keep moving. What they forget to mention is that you lose your earlier version to a death caused by growth. Eulogy by love herself. She, a flowing, anxious soul, fluttering in and out of stories, barely writing her own. Her first mark, her last. She left us today. For what? Utter bullshit. Anger muttered. She should have chosen us. Jealousy mumbled. I think we are not good enough. Insecurities mumbled. She anyways is better off without us. Huh? Self-centered asshole. Gaslight said and manipulation agreed. Love continued. Today, I accompany the corpse of her past self to the crematorium of the end. Her corpse melting in the fire of perseverance and agony. I lose her past childhood to the shadows of adulthood, her faith to doubt and innocence to deceit. She'll no longer play in the gardens of truth but would be soiled with lies. Her new life will now be molded with new difficulties. Today we mourn the death of your host and my new project. Her ashes are collected after 19 years, 11 months and 28 days on the 29th. She's grown. She's dead. She'll no more sing the songs written by others and excessive positivity. She shall not quiver. She'll no more seek external validation. Hearing this, the mourners frowned. Love continued. She'll still haunt the chambers of anger and linger around jealousy's wardrobe. She'll haunt innocence in her dreams and pry on her skin, and innocence thought that it is okay. Anger smirked. Spells started being spoken to beckon her spirit already. Love. But for now, she's dead. Her body as lifeless as the germs of time that killed her. Let us lay her past to rest, for she has grown. Thank you. Do I have time? Okay, wonderful. I just need to look for one more poem. So basically, it's called My Honest Poem, and it's a brief introduction to who I am as a person. So let me just find it out, please. नेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. My Honest Poems is inspired by Rudy Francisco. I was born on October 29th. That makes me a Scorpio. I don't know what that means, but people keep telling me that I love fiercely. I'm 5'5". I'm taller than my mom, and she said that it makes my head bow in reverence and necessity each time I talk to her. I weigh 50 kgs, but most of it is poetry and tea. I don't know how to drive, and I'm a sucker for a guy wearing a nice smile and a crisp shirt. I love dancing and singing, and I know I'm not good at it, but that doesn't stop me from singing Pretty Woman in corridors filled with people. And yes, I like fries. A lot.
I'm a sucker for ginger tea and pride myself in making the best tea that there is. I often speak when I'm not spoken to and stay silent when the world is rambling. I am very good with making people feel good about themselves, mostly because it's something I wish they said to me. I swear on roses and spirituality, I feel they personify love for me, all that I ever had. I quote from my favorite poems quite so often, people think that I've written them. I know it sounds weird, but sometimes I wonder what my kurta thinks about me when it's alone in my room. Does it take pride in knowing that it is only my source of luck? Everything else is hard work. I've got a photo album that's overflowing with memories. I wonder and I am scared that you will make banners paraded around the city showcasing my mistakes. Hi, I'm Nawaz and okay, just a second. Hi, my name is Nawaz and I enjoy cheesecakes, people laughing for no apparent reason, and I have a sunlit smile and a solar power confidence. My hobbies include writing my life story, hiding behind confidence, and convincing myself that I'm someone worth loving. I don't know much, but I do know this. I know heaven is filled with poetic rhymes and debates, and I know God listens to my poetic debates. Reminds her that we still have work to do. Thank you. We still have work to do. We still have work to do. Amen to that. Amen to that. Lovely. That was a lovely piece. Sorry? I said wonderful. Wonderful, right? Please, another round of applause. That's what what I love about this space is that people come here and talk about such deep and vulnerable things, and and other people get it. There's this sense of we're not alone in this together, no matter how much writers tend to cry कि मैं अकेला हूँ. They're not. That's love. Great. I mean, that's one of my favorite things about this space, about spaces like this in general. A very dear person to me, my partner, whom I've been with for 2 years, often says that writers are not born, they are made. And I think that's very true. We go through so much shit. So much of it is self-inflicted. किसी ने नहीं बोला यार कोने में बैठ के ईमो बनो बट हम लोग करते हैं मजा. So I think there's this string that connects everybody who has emotional intellect, and that is what we call relatable AF. So that's when a piece like that comes along, it's very refreshing, and I'm really happy that we had this opportunity to share your poetry. Thank you. Okay. With that said, it also reminded me of a piece I had written called Lost in Translation, because you talked a lot about how different emotions speak to you, how different people speak to you, and what they are trying to say and how you interpret them. So sometimes a lot of things are just lost in translation, and that's what this piece is. Wow. There is a chasm between what is said and what is understood, like the remix of a song you once felt in your bones, but somehow time and tide and synthesizers have fabricated it into a new lie. You regard art as a form of expression. But art is also an impression, a rubber stamp on your psyche. So here's the catch. You have constructed this stamp out of your own experiences. And art is actually the ink pad. What happens when you regard a painting? Does it regard you? Is this what Nietzsche meant when he spoke of the abyss peering back at you? Think about it. Trouser belts and shoelaces have practically the same function, but we tie them differently. A shoelace must bend and twist and knot in a certain way, but belts need to only go in one direction to hold things in place. Like how today both you and me are writing about mostly the same things with mostly the same ink, but we bleed differently. Like how metaphors are convoluted, but they make understanding easy.
strange. It's strange how the simplest way of saying something is to simply say it. But still, sometimes it makes more sense through a poem. And so there is a chasm between what is said and what is understood, where a word like respect can translate to both a demand for authority and a show of humility. And identity can be measured in both documents and disbeliefs. And the abyss can smile back at you, but you wouldn't know whether it wants your friendship or your blood, or simply wants to be understood. I mean, perhaps the darkness simply wants to be understood, but there is a chasm between it and the light, canyons where identity is like Lucifer, death, depression, Ravan, dickheads, liars, criminals, humans, loneliness, emptiness, sadness, confusion are simply lost. Lost in translation. Thank you. Thank you. With that, I want you all to keep the energy up for our next performance. Come on, keep clapping, keep clapping, keep clapping. Louder, louder, Hussain! आई एम हुसैन कुछ 4-5 कपलेट्स लेके आया हूँ सुनने से पहले अगर कंट्री एक सेकेंड सुनने से पहले अगर कंट्री के कुछ हिस्सों में पिछले 2-2.5 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुए ना उनको अगर आप जहन में रखोगे तो शायद आप रिलेट कर पाओगे कुछ ऐसे हैं कि इंसानियत से आज फिर रुख अपना मोड़ कर इंसानियत से आज फिर रुख अपना मोड़ कर मज़हब ने लंबी सांस ली एक घर को तोड़कर इंसानियत ने आज फिर रुख अपना मोड़ कर मज़हब ने लंबी सांस ली एक घर को तोड़कर अरसों पुराने रिश्तों को ज़िंदा निगल गया अरसों पुराने रिश्तों को ज़िंदा निगल गया जो बच गए तो चल दिया ऐसे ही छोड़ कर घर भी जले शहर जले लाशें थी हर तरफ घर भी जले शहर जले लाशें थी हर तरफ रैबर थे जितने सो गए मखमल को ओढ़कर रैबर थे जितने सो गए मखमल को ओढ़कर ये क्या हुआ मुंह फेरते हैं लोग सारे अब ये क्या हुआ मुंह फेरते हैं लोग सारे अब चलते थे कल जो साथ में चलते थे कल जो कांधे से कांधे को छोड़कर ये लास्ट शेर है कुछ ऐसा है कि ना रास आया इसको मोहब्बत का एक भी जाम ना रास आया इसको मोहब्बत का एक भी जाम कम वक्त पी गया ये लहू को निचोड़ कर इंसानियत ने आज फिर रुख अपना मोड़ कर मज़हब ने लंबी सांस ली एक घर को तोड़ कर Lovely, lovely. Some very important things in that piece that I will not address. I like myself here. So I'm not going to go there, but thank you so much for bringing it back. An important discussion. Talking about important discussions, we left off last when we spoke with Faisal about doing more for your work. How many of you use Instagram as a tool to promote yourself? How many of you put your work on Instagram? Shall let's do that. Yeah? Yeah? Some of it. I do it too. I haven't, and so there's quite a good number of us. I saw 7-8 arms going up in the air. So a good number of us. I do it too, but I haven't for, the मन नहीं करता यार. And especially since they've gone to this stupid format जहाँ पे सिर्फ reels डालनी है. तो मतलब तुम रील्स में पोस्ट कर दो फील्स लाइक दैट reels करते हो आप? हाँ वही वर्क करते हैं एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑन पिंटरेस्ट बहुत अच्छा. एंगेजमेंट आती है बहुत Pinterest पे? Pinterest पे Do you agree with us, Mr. SEO, Faisal? Yeah, if you need like popularity
Do you think Pinterest is a good platform? Yeah, because a lot of women like in the afternoon have a lot of time. A lot of women in the afternoon have a lot of time. Yeah, not being sexist, but Excuse me. but that's what Pinterest is basically. That I think that's a marketing side. So men don't have time in the afternoon. How sad, yaar. That's on the other platforms. That's what Other platforms. I'm very interested. Please name one platform that men who have time in the afternoon go to. Enlightening. Okay, okay. Please don't put your poetry on those platforms. I mean, चल तो जाएगा. Comment section सब देखता है. Okay. All right, but Pinterest, you're saying. How many of you don't want to do this? Like, how many of you are like social media? I'm too good, yaar. Finish your sentence. So, Miss, I'm too good for social media, sitting in front row, in the front row. Wow. Okay. But no, seriously, how many of you think that art doesn't belong in these spaces? Good. Oh, okay. I'll tell you why. Why? Algorithms don't define how well you write. Exactly. Algorithms don't define how well you write. That's not my question. But the thing is that हाँ. when you आप एक चीज को जब बनाते हो उसको आप एक तरीके से ढालते हो, ठीक है, एक मोल्ड में आप उसको ढालते हो और फिर वो जब निचोड़ के आगे पीछे तोड़ मड़ोड़ के जब भी आप उसको प्रेजेंट करते हो फिर it loses its essence. So as she said that if I want to make a post, but she said that you know what, Nawaz, you should try Reels. But then what if it's not what I want? It's not the right Exactly. Like I want my work to be there. I don't want any shady ass sound to be playing in the background. So you get my point. I get your point. That's why even I have kind of shied off of Instagram. But my question is more along the lines of, does art belong on a platform like Instagram? Why not? Why not? Yeah, It belongs everywhere. Yeah. exactly. Perfect. That's exactly what I want to hear. Y'all are a brilliant audience. Okay, but my point here is, ठीक है. So where is that line, Nawaz? Where do you think that line is? Where to an extent you can bend your art form to जब तक support the उस- platform, yeah. or do we rise up as artists and ask the platform to support us? Okay. Very weird. More weird than my mood court judges what they ask me, but okay. So basically, when you go and put up your art, right, you want people to see it for what it is because it represents a part of you, and that shouldn't be forged. Your art shouldn't be forged if it's for that you're not being true to yourself, and that's the biggest line we never say. But then that brings me to the debate of art and craft, right? हाँ, Because कर लो ना जो करना है. एंड मोमेंट में अगर तुमको लगता है सही है कर लो. that's not where I'm coming from. But take a fair point. You want your art to be a true representation of yourself. But the thing about art is that it is subjective to everyone. Yes. There's a very good chance that 60% of the time your art will not represent what you want it to represent to somebody else. मतलब you have done the work, you've done the job, but किसी और को वो उस तरीके से land ही नहीं होगा. It's like talking to a Sanghi about gay rights. So, where is that line then on a platform like Instagram? Anybody else? Does anybody else want to talk about this? As you said, it's very subjective. Actually, a lot of time we sort of try to overlap these two things, like the amount of followers and the amount of engagement that you have in a post is something different. And when you're writing, like as Nawaz said, when you're writing for yourself or when you're writing like without having that conscious in mind that you're writing it like from a commercial perspective or from the fame perspective, I think that's the fine line. Because a lot of people, people who have been performing and writing, they have seen this basically. There are people who write just to get their name out. And there are people who legit write. Like, because Vivian is there, Harsh is there, they have seen the constant people who are coming to the same platform, like 6, 7 years, 8 years, and maybe more than that, like Hussain is one of the main examples. See, that's And there are people that comes only for like a month or two and then they just vanish. yeah. That's the fine line. Basically. That's the fine line. Okay, good point. I'll take that point. What I want to say now is, as long as you're not looking at, it depends on where. Okay, sorry, Can we I have. just throw something else in? Sure. It's really not about likes and engagement. And having done this for a while, I've been writing for the last 15 years professionally.
And just because you know वो थोड़ा डाल देता हूँ यहाँ पे, so you all take me seriously now. Okay, true. But the point is that it's not about कितने likes मिले, कहाँ है, कितने platforms है, क्या है. It's an endless sea, and feel free to explore. But up your writing game, dude. Work on your writing. How good's your writing? What are you putting out there? Like work on that. If you have hours to burn, don't spend them on Twitter. Spend them writing. Spend them reading. How many of you are on Twitter? अटैक किया क्या सर? सही बोला, एकदम सही बोला. नो आई एग्री. मैं बिल्कुल भी उसको डिबेट नहीं कर रही हूँ. पुट योर वर्क इनटू योर राइटिंग. 100%. वेरी गुड पॉइंट. ठीक है. ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आई एम सॉरी, थोड़ा सीरियस डिस्कशन हो गया. we'll turn it back into funny. We'll go in that direction. And I think the next poet that I'm going to call is probably not the best choice for that outcome, because I've heard his work before, and he's going to make you think about more serious things. So, unless he has a new trick up his sleeve that I haven't come across before. So, everybody, I want you to start clapping again. Start clapping. Please put your hands together for C.W. Kage. Hey, thank you so much. Is it okay if I move this mic stand to the side? Anyone? Sure, it's fine. Okay. Yeah, thank you. Sorry, Richa, no new trick up my sleeve this time. But a few trigger warnings, anything related to depression, suicide, or toxic relationships, and in that spectrum, so I apologize in advance for that. So I've got a poem called Lies. And has anyone ever broken out of a toxic relationship and you find yourself keep going back again and again, and it's not because you love the person or you care for the person, you know that toxicity is going to hurt you, but you keep going back again and again. It's simply because the pain of their toxicity doesn't hurt as much as the pain of you being alone with yourself, with your thoughts. And so I asked her to hold me tight. Be my blanket for the cold inside. Be my blanket for the cold of the night. Because the darkness outside calls out to the darkness within, waking demons as they get ready to party and wear their anti-esteem bling as they perfume themselves in grim. And I'm the one that gets caught in that rave, where the blood to my heart is spiked by the drug of distaste. Atoms of my soul are being laid to waste as they explode to the beats of music I hate. But she is my light. A broken bulb, but that's all right. You can't choose in a kingdom where emptiness rules. You can't choose in a kingdom where emptiness rules. Ask loneliness the peasant, it'll tell you anything will do. So she is my alcohol, my now stimulus. And I'm parched in this ghost town where the only thing functioning as a bar, you think I care about cirrhosis. And she sees my mirrored glasses in this poker game. Yet, she pretends to be blind all the same. So the onus is on me to convince her to play. And if I'm at her doorstep, it means I've got nothing left to lose anyway. She wants to cut a pound of flesh from my heart. Honey, you left it in pieces. Go ahead, pick apart. And boy, can she navigate this maze in my head. I mean, she built the walls on the grounds where she laid my smiles to rest. I'm the one that gets lost there instead. Sometimes I think she entertains me just so she can look at her art. To see how much the turpentine of our distance has brought me, her canvas, back to the start. Or is there a fresh coat of paint, perhaps another's contribution? And how will she react to it? Will she add more, or will I face retribution? Well, whatever her reasons, the greater is my need. So this sentence to myself is passed down by me. See, if you're smart enough and if you're fast enough, you can run from problems nearby and win. But this is decay. Decay is closer than kin. Decay is closer than skin. It's a fusion reaction, and all it needs is a spark, and it burns your soul as infinite molecules of thoughts are screaming in the dark. One says, hey, look at that rooftop. Why don't you try to fly for a while? You might feel weightless. Another says, hey, it's getting noisy in here. Why don't you find some lead to silence the head? Every voice,
a different name. Every voice a different game, but the pain remains the same. The pain remains unchanged. And there is no snooze button for this alarm. So she is my toxic injection, layered and calm. And I promise you, if I could wait, I would hold my breath and bite my tongue and wait. And as much as this is in my head, this crumbling, it feels real. And you can call me Logan, but I'm withering faster than I can heal. And so I turn to a demon who wears a halo and wings and stands in the light. And I ask her to hold me tight. Even if it's just for tonight. Even if it's just a lie. Thank you. Keep it going, keep it going. Toxic relationships. How many of you have been in one? Fuck, yeah. Girls always do a number. So a lot of poets I talk to say that I started writing after my girlfriend broke my heart. Or, you know, I fell for this guy and I wanted to tell him how I felt. So I wrote it in a poem, but then he left it on red. That's how writing starts. So, call back to writers are not born, writers are made. Okay. With that, I would like to call on the next performer. She's a first-time performer. So I want all of your energies up here while I call her on. Okay, we're going to start practicing once again. Shaija, can Shaija come on stage? Thank you. I'm new to Bombay, so that's how it's my first time here in this place. मेरा नाम शैजा है, थैंक यू. और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, so happy World Theatre Day to all of you. And I run a space in Hyderabad. It's a theatre space. It's a lovely space. Whenever you get to go to Hyderabad, please visit Rangbhoomi cultural spaces. Yeah, so that's how I promoted my space right now. Yeah. Okay. तो मैं नई हिंदी में लिखती हूँ. नई हिंदी मतलब बोलचाल की भाषा जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं. और ये कविता उनके बारे में है. हमारे पहले बहुत बड़े ग्रुप्स हुआ करते थे, 8, 10, 12. फिर वो ऐसे 5-6 लोगों का हो गया, फिर वो 4 का हो गया, फिर 3 का हो जाता है, फिर 2 का होता है, फिर अकेला बचता है. आजकल मैं 3 लोग वाले ग्रुप के फेज में चल रही हूँ. तो ये उनके बारे में. इसका नाम भी 3 लोग हैं. 3 लोगों की बातें सुनकर मैं दंग थी. 3 लोगों की बातें सुनकर मैं दंग थी. सभी को एक दूसरे से बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा. सबको एक दूसरे के अंदर बहुत कमियां दिखती थी और कोई सुन नहीं रहा था. सब अपनी बोलने की बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे. तो मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी. अब बीच में 1-2 टिप्पणियां भी दे दी क्योंकि आदत से भी तो मजबूर हूँ. सब अपनी अपनी जगह सही थे और दूसरों की जगह से सिर्फ गलत. अब इस झगड़े के कारण भी सबके अलग थे. और जब ये पूछा गया कि शुरू कैसे हुआ, तो सबके किस्से भी अलग. अब जब मुद्दई यही ना समझ पाए कि झगड़ा किस बात का है, तो मुकदमे की मुहर लगे भी तो किस बात पर. अब ये 3 लोग जब बीच में कभी थक जाएं, तो अपना रुख इंडिया की वेटिंग लाइन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, मंदिरों का निर्माण और किसानों की महीनों से चलती आ रही लड़ाई और आजकल कश्मीर फाइल्स की ओर बदल लेते हैं. और उधर एक तेज धार का चाकू इन्हें लगातार घाव कर रहा था. लेकिन इनका मैं इन सब से बहुत ऊपर था. इतना कि अपनी जगह पर अड़े रहने की होड़ में वो कलाई पर खिंचती धारियां जो अब हड्डियों तक पहुंच गई थी, वो भी महसूस नहीं होती. इन सब में अब मैं एक मूक दर्शक बन गई थी, क्योंकि किसी को भी गलत कहना मेरे बस का नहीं था. तो मैंने इन तीनों को कहा कि ज़रा धूप से हटकर छाँव में आ जाएं. लेकिन जब जंग सा माहौल होता है तो पाँव जलते हुए नहीं दिखते हैं. किसी ने मुझसे इनका परिचय पूछा तो मुझसे वो भी नहीं बताया गया. मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि कहीं नाता रिश्ता ना निकल आए. अब ये सब मैं ही थी. एक जो मैं बन गई थी, एक जो मैं बनना चाहती थी,
और एक जो मैं बनना नहीं चाहती हूँ। इन सब में मैं वो हो गई जो मुझे दूसरों में ज़रा सा भी पसंद नहीं था, लेकिन अब लगता है कि इन 3 लोगों की अब थोड़ी और आगे बढ़ गई लड़ाई में मेरा कुछ नहीं बचा है। तो अब मैं अपने कमरे में रहती हूँ और कमरे की दीवारें इतनी ऊपर बना दी हैं कि वहाँ से झाँक कर देखना चाहूँ तो भी दिखता नहीं है। कभी कभी लगता है ये दीवारें खुद ही ईंट जोड़ती जा रही हैं। कोई मुझसे पूछता कि अपनी राय देता है कि शायद मुझे अपने तरीके बदल लेने चाहिए। मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन जिस मिट्टी में मैंने खुद को खो दिया था वो खुद भी खाक हो चुकी है। जिस मिट्टी में मैंने खुद को खो दिया था वो खुद भी खाक हो चुकी है। और ये जो तरीके इतनी बार बदल दिए कि घंटा याद है कि असली वाला कौन सा था। खैर, ये जो मुझे राय देते हैं वो खुद भी अपने तरीकों से नाराज़ हैं और उनकी भी मिट्टी कहीं खाक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी भ्रम में जी लेना चाहिए कि सब मस्त है। ये मिट्टी ढूंढने का चक्कर और उसमें से नए तरीके बनाने का चक्कर बहुत लंबा और बड़ा ही बोरिंग है। और फिर ये जो लोग हैं वो पहले भी मेरे तरीकों से नाराज़ थे और अब भी हैं, और शायद जब मैं उस मिट्टी में मिल जाऊं तब भी होंगे। खैर, अब मैं नए 3 लोगों की ओर बढ़ रही हूँ जिनकी आवाज़ें मेरे कमरे की दीवार से उस पार से सुनाई दे रही थी। अब मैं कुछ देर वहाँ रुकूंगी, उनकी बातें सुनूंगी, थोड़ी सी टिप्पणियाँ भी कर दूंगी, और जब वहाँ मेरे लायक कुछ नहीं बचेगा तो मैं चल रही हूँ। मैं बस अब ये लड़ाइयाँ देखती हूँ, सुनती हूँ और अपने कुछ नहीं कर पाने पे 1.5 मिनट पछताती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा पछता के फ़ायदा भी नहीं। Lovely. This can't make everyone happy. You just cannot. It's not sustainable and it's harmful, in fact. So your own peace prevails over everything. Shaija, everyone. Yeah, come on. Again, I love the confidence with which you came on stage and just said it, because मेरी अभी भी मतलब when I started today's show, I was still nervous, I was still trembling, and I've hosted so many times, not at Habitat but other places. I've hosted so many times, I've performed so many times, it never goes away. On my way here, I was like, oh fuck, पेट में कुछ गड़बड़ है. But that means you care, right? Yeah. But I don't think that means. वो सारी गड़बड़ होती है, दिखाना नहीं होता। She does theatre. Okay, y'all, if you want to get rid of stage fright, do theatre. Okay, lovely. Okay, so we're going to keep the performances going for a bit longer. Okay, keep clap. Next performer, then Shikta. Hi. Trigger warning issue, body image issues. So if someone is uncomfortable. This is one of the closest piece I've ever returned. I was 30 when I saw this purple-like line on my stomach. It was weird, but I thought it would be another bruise and it would fade away with time. But it did not. And I was so scared about them because I did not know anything about this purple-like line. But then I saw the same purple-like line on one of my auntie's stomach when she was wearing a sari. So I thought it was something normal, something like periods you get once you start becoming an adult woman. At 14, I saw the purple line started getting on my legs and thighs as well. At 15, the internet boom happened and I had access to internet 24/7. And I came to know that those lines were known as stretch marks. Okay, interesting, I thought. At 16, I saw these beautiful looking models in their bikinis with this amazing goddess-like body. And I started to wonder, why do not I have a body like them? Why do I have stretch marks all around my body? And eventually started hating them. At 17, I started Googling ways to get rid of them. One of the ways was to put Vicks paper up on my stomach and wrap plastic wrap around it and sleep overnight. So with sweat all over my body in a hope that in the morning they would magically disappear. But they did not. So the next thing I bought was bio oil to see if that could work, but nothing did. And ironically, the stretch marks started appearing on my arms as well. So I started wearing clothes that would cover every part of my body that has stretch marks on it. At 18, I stopped looking myself in the mirror because I did not like the way I looked. I just hated my stretch marks so much. At 19, I started living in a hostel
where there were women all around me, but I was so ashamed to change in front of them that I used to go to a washroom that had wet floor 24/7. So somehow I used to change there and try not to ruin my outfit. At 20, I noticed something, that almost every woman around me, and even men, had stretch marks around their body. So this one day, I was walking in the middle of a flea market and I saw this woman who wore a tan top and she had stretch marks all over her arms. And she carried it like a pro. And I was just amazed to see a real person who can actually pull this off, and no one cared. At 21, I finally accepted myself. And I started accepting my stretch marks as a part of my identity. At 22, after 9 years of hating my stretch marks, I finally started liking them. If I could go back in time and tell the 16-year-old Vanshika that there would be a time when you would love your stretch marks, she would have laughed so much. But in reality, I actually accepted my stretch marks, and I know that they are a part of me and I can't get rid of them. So to all the people listening to this, it's okay to have flaws. Never let society tell you what their view of beauty and ugliness is. You are the one who can decide it yourself. No one else can. Nobody is perfect. Period. Thank you. Nobody's perfect. Very important conversation, yeah. 17 to start looking for cures for stretch marks. That's pretty young. Sometimes I'm really startled by, my younger cousins who are just in 8th, 9th standard, worrying about how they look and refusing to go outside because of it. My mom is overweight. She has thyroid issues. And at one point she quit her medication because the medication wasn't helping with her weight. And I just think something the society has stigmatized so much reached a point where, something like that, you don't do that with thyroid meds, man. And I had to tell her, I had to have this conversation with her. Okay, it's not about the weight. There's not a single medicine in the world that you can eat and have your weight reduced by. So if any of you are still struggling with this, know that that is not where you're going to find the cure. Acceptance of your body is a very important thing, and the sooner we teach our children and our sisters or brothers that it's okay to have a pimple, man, it's go away in 2 days, just take a chill pill, the sooner we'll get to a place where we won't have to deal with these kind of things. Sorry, that got me a little emotional. Because yeah, man, who hasn't looked in a mirror and gone, this is not worth it? Who hasn't done that? I know people who stopped keeping mirrors in their homes because of body image issues. So thank you for that piece. Another round of applause. Lovely how you can just be vulnerable on stage in front of a bunch of strangers, but there are still things that you cannot tell your parents. Okay, on that note, I do have a poem for you before I call the next person on. It is about a cat. How many of you are cat people? I'm not, but I'm becoming one. You're becoming one, that's the best. I remember when I was not a cat person, and I was becoming a cat person. And What's the name of the cat? what's the name of the cat? So the cat who converted me did not have a name. But the name of... Sorry, but the name of the cat in this poem is Timothy. Okay, so the poem is called Watch. There is a stray cat across the street to my house. He is a wild thing with demon eyes, a solar yellow burning into the night. Sorry, 1 second, I'll start again. There is a stray cat across the street to my house. He is a wild thing with demon eyes, a solar yellow burning into the night. I call him Timothy. Now, Timothy does not like company. He will sprint into the bush on a good day. On the others, he will draw blood. I have seen him. I have seen him grab rodents by the neck, even a full chicken once, the lifeless limbs dragging in the mud, leaving tracks that no one will read. His fur is often soiled, but he grooms vigorously. So when the afternoon hits, his coat glimmers in the heat.
Timothy will watch the stars at night or stalk owls. He will sharpen his claws against a tree, brush his whiskers in the grass, and leap at frogs. He hisses at distant passerbys and likes being on his own. But I once saw him with a girl no older than 5 trips around the sun. Timothy, with his golden eyes, delicately, sorry. Wow. This is unedited. The edited version is here. I'm so sorry, you guys. Nightmare. I'm sorry. I'm really sorry. I'll start again. Terribly sorry about this. Okay, there is a stray cat that hunts across the street to my house. He is a wild thing with demon eyes, solar yellow burning into your soul. His coat is deep indigo. Edited. His coat is deep indigo. The claws are black sights, and his scarred maw without a lip reveals teeth of pearl white. I call him Timothy. Now, Timothy is not exactly friendly. He will sprint into the bush on a good day. On others, he will draw blood. I have seen him break rodent necks, even a full chicken once, the lifeless limbs leaving tracks in the mud that no one will read. Timothy will stalk owls or sharpen his claws against the trees. He hisses at distant passerbys. I think he likes being on his own. But once I saw him with a girl no older than 5 trips around the sun. Timothy, with his golden eyes, got too close for comfort. She watched him too. She watched him too, somehow entertained. His haunched arches and antenna tail were quite the show. But all he did once he was near was stop and lick her nose. So, thank you. Thank you so much. With that little embarrassment out of the way, I have forgotten the next performer, so on to the new embarrassment. Can you please pass me? Thank you so much. You all are a wonderful audience. Thank you so much for being so understanding. The next performer is Dharvi, first time performer. Before Dharvi comes onto the stage, let's build up some energy again for our first time performer. And I want you to start clapping. Dharvi! Everyone. Hi. It's not my first time performing, but yeah, I'd have it at its first. And I very recently shifted to Bombay. And it's been 2 months and it's been a crazy ride. Like, I've been to several places and I've been a very slow-paced person, but here everybody is just running around. So I dedicated my first poem to Bombay. It's called In तारों की बस्ती में. इन तारों की बस्ती में एक नन्हा सा चांद रहता है. इन तारों की बस्ती में एक नन्हा सा चांद रहता है. आसमान में अकेले खड़ा वो कुछ सपने लिए. उन तारों की तरफ जब कुछ यूं ताकता है जैसे उसकी चांदनी को किसी की नज़र लगी हो. फिर अगले ही पल कुछ फुदक कर थोड़ा मुस्कुरा देता है. इन तारों की बस्ती में एक नन्हा सा चांद रहता है. ज़मीन की ओर ताकते हुए थोड़ा खींच कर थोड़ा हंस कर वो न जाने क्या क्या सोचता है. क्या तारों से दोस्ती उसकी कुछ मुकम्मल होगी? क्या रोशनी से वो थोड़ी मोहब्बत कर पाएगा? ऐसे अनगिनत सवाल जिससे वो आजकल थोड़ा परेशान रहता है. इन तारों की बस्ती में एक नन्हा सा चांद रहता है. दूर से इस बस्ती को देखते हुए एक कदम उसकी ओर लेकर फिर उसी पर 2 कदम पीछे हटकर न जाने कितने ख्याल आते होंगे उसे. क्यों वो चुप है? या फिर ये चुप्पी में एक अडोल शांति है जो राहत तो देती है मगर अगले ही पल एक शोर उमड़ता है. इन तारों की बस्ती में एक नन्हा सा चांद रहता है. Just a second, people.
So the next poem is called Chand. So there's not a lot of place here where you know one can be with oneself, and every day I just get like an hour post dinner and I just take a walk on the terrace, and that's when thoughts hit me, and that's when I wrote Chand. लाल चांद फिर से दिखाई दिया आज, काले बादलों के बीच से झांकता हुआ वो बहुत तसल्ली से मुझे देख रहा है कैसे मैं अपने ख्यालों में मग्न अपने बाल थोड़े बांध कर थोड़े खोल कर किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। सर सर चलती हवा से शायद पानी आ गया है उसकी आंखों में, तभी तो थोड़ा नम लग रहा है, पर मुझे क्या, मैं तो अपने चांद की यादों में कहीं कहीं खुद को टटोल रही हूँ। मेरी इस नासमझी पर ये चांद थोड़ा मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो, अरे पगली वो चांद ही क्या जो मिल जाए। चांद की रोशनी में तो जुगनू भी जल जाया करते हैं, तुम्हें तो अभी थोड़ा और जलना है, थोड़ा और पिघलना है, बिल्कुल उस मोमबत्ती की तरह जो जलकर भी अंधेरे में उजाला कर देती है, बिल्कुल मेरी ही तरह। My last piece, so it's in Punjabi. I hope you guys understand a bit of it. Yes. Yeah, so as you said that, you know, when you write something for a crush and they leave you on scene, so that's exactly what happened with me. Yeah. So there are one or two words. Parshava means shadow, udik means to wait. It's called Pehli Baar. कल तू मेरिया यादां वाल वेख्या पहली बार, कल तू मेरिया यादां वाल वेख्या पहली बार, ओ गल ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ, ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਹਰ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਥੋੜਾ ਉਡੀਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। I'll end my piece here. उस कमीज़ में सिलवटें वैसी ही पड़ी हैं जैसी तुम्हें पसंद थी, उस कमीज़ में सिलवटें वैसी ही पड़ी हैं जैसी तुम्हें पसंद थी। ध्यान रहे झटकने से कहीं वो चली ना जाए, क्योंकि तुम्हारी खुशबू तो उनमें कहीं अटकी है, और उस खुशबू में अटकना शायद अब रास आने लगा है मुझे। थैंक यू सो मच। पहली बार मैंने पंजाबी में पोएम सुना, बहुत मज़ा आया। लवली पीस। लिखते हैं हम लोग जनरली प्यार के लिए काफ़ी लिखते हैं, एंड काफ़ी। Did he actually, like, did you ever have a chance to read this? Yeah, I did. To him? But I was drunk. I did. But yeah, I also, his writing got rejected, so yeah. Oh, so उसने बोला ऐसा किया है किसी ने मेरे साथ पहली बार। Unfortunately, for him. Exactly. Unfortunately, for him. Not worth it. I've written poems for people who aren't worth it too. I think we all do that. But I've also been lucky enough to write poems for people who are worth it. So that happens. Life can surprise you.
Okay. I really want to continue our conversation on writing, but seeing the time restraints we have, Aditi is giving me daggers. So I'm just gonna call the next person. Everyone, put your hands together for Sanju. बाखुदा इतना शोर मचाते हो, बाखुदा इतना शोर मचाते हो अंदर से खामोश होके, बाखुदा इतना शोर मचाते हो अंदर से खामोश हो क्या? ठीक है, मैं पूरी ओके हाय, माय नेम इज संजू और यही कविताएं किस्से वगैरह लिखता हूँ मैं. और ठीक है, संजू आई डू नॉट हैव अ मैजिक पेंसिल, आई जस्ट हैव पोएट्रीज वर्क्स द सेम. तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, जो नौकरी मैंने छोड़ दी है. अच्छा लगता है कि कहीं से छोड़ कर निकल कर आना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ अ वाइब. तो जब वो नौकरी कर रहा था, सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू, यू एब्सोल्युटली डू नॉट वांट टू, एंड यू कैन नॉट टेल योर पीपल दैट यू नॉट वांट टू वर्क हियर, तो बहुत दिक्कत होती है मतलब यार. एंड इन दैट फेज यू हैव अ लॉट ऑफ नाइट्स व्हेन यू ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये तो मेरे को करना ही नहीं है. तो उसके होते ही ऐसा होता है कि अब तकलीफ तो बहुत हो रही है, एंड यू आर राइटर. तो वो चीज़ें कुछ महीनों बाद देखते जैसे लगता है कि इतनी हैवी तो थी नहीं, पर मैंने लिख तो बहुत दिया इसमें. तो वैसे एक रात में लिखा था मैंने कि पैर दुख रहे हैं, रास्ता दिखा दो ना, कमर टूट रही है, बोझ कम कर दो ना. पैर दुख रहे हैं, रास्ता दिखा दो ना, कमर टूट रही है, बोझ कम कर दो ना. ध्यान बट सा गया है, ध्यान कुछ बट सा गया है, एक चाय बना दो ना. राहत नहीं तो खैर मेरी खैरियत ही मांग लो ना. चलो कोई बात नहीं, तुम भी मजबूर हो, चलो कोई बात नहीं, तुम भी मजबूर हो. ये हालात भी एक बिन मांगा फितूर है, मैं भी तो तेरे सपनों का फितूर हूँ, मैं भी तो तेरे सपनों का दस्तूर हूँ. जिंदगी का क्या है, ये 2 कंधों पर 4 जिम्मेदारियाँ लिए, 4 कंधों पर मौत तक का सफ़र है. तो जब इन 2 कंधों पर ये ज़िंदगी संभली नहीं जा रही, तो जब मेरा हाल नहीं पूछ सकते तो अपना हाथ ही दे दिया करो. सो सॉरी, बहुत सैड टाइम में लिखा था मतलब. So we won't be talking about a lot of sad things today. We just talked about love. I have no clue वो sad है तुम्हारे लिए या क्या है, but I have written about love. तो मैं तो मतलब I would like to believe that it is a good thing until it breaks your heart. तो मैंने यूँ लिखा था कि एक बात कहना है, एक रात लेकर आना. एक बात कहना है, एक रात लेकर आना, उस रात के संग एक ज़िंदगी बिता कर जाना. एक बात कहना है कि वो मुझे ख्वाब सी लगती है, पाकीज़ा बेज़ुबानी सी लगती है, पाकीज़ा बेज़ुबानी सी लगती है. ये कोई बनी बनाई कहानी सी लगती है, वो कहानी जिसमें 2 लोगों के मिलने से पहले उनका मंजर मुस्कुराता नजर आता है. पास ना रहे तो जैसे एक आस सी जगती है, पास ना रहे तो जैसे एक आस सी जगती है, पास रहे तो भी वो प्यास नहीं बुझती है. I will have to. ये कहानी जो शुरू होती है, देखने वाले हर इंसान के आंखों में वो सजती है. वो जो मुझे ख्वाब सी लगती है, वो जो रांझे के हाथों में जन्नत सवारा करती है, वो जो रांझे के हाथों में जन्नत सवारा करती है, वो जो मजनू के ख्वाबों की बातों को ललकारती है, वो जो वेद की परछाई बनी फिरती है, वो जो जॉर्डन के संगीत में उलझी रहती है, वो जो 100 बार पलट कर देखती है, वो जो 100 बार पलट कर देखती है, वो जो मेरे ख्यालों में एक छोटी सी बस्ती बनाकर दिन रात मुस्कुराती है, वो जो मुझे ख्वाब सी लगती है. गए कुछ किस्सों के हिस्सों में मैं ढूंढता उसे, वो एक जहान लिए मेरे लिए ठहरी है. दरिया सी आंखें जिनमें डूबने से घबराओ नहीं, समंदर के बीच वो एक जहान लिए ठहरी है. उसके होठों पर मैं एक मशहूर गीत लिख दूँ, उसके होठों पर मैं एक मशहूर गीत लिख दूँ तो सुनने वाला भी उसकी अदाओं पर मर जाए. वो जो हाथ थाम ले
वो जो हाथ थाम ले तो धड़कनों की दौड़ में 2 पल सांसें रोक कर मेरी आबरू भी हार जाए। धीमी सी आवाज़ में मैं जब उससे पूछूं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और जब वो ना कहे कुछ तो उस सन्नाटे में अपनी ज़िंदगी बिता लूं। सन्नाटा जहाँ वो मेरे कंधे पर लिपटी रहे, उसकी सांसों में मेरी सांसें सिमटती रहे, और मैं कभी पूछूं कि मैं कौन हूँ तो वो कहे कि तुम सुकून हो, और तुम वो कहानी जिसमें 2 लोगों के मिलने से पहले उनका मंजर मुस्कुराता नजर। तो हाँ, दैट्स ऑल। बस प्यार वहाँ तक ही हुआ था, फिर प्यार होता है, कुछ टाइम के बाद वो शख्स चला जाता है, तो उस पर लिखा था कुछ तो जिक्र कर दो उस शख्स का, हम तो उसकी यादों से भी घबराते हैं। कुछ तो जिक्र कर दो उस शख्स का, हम तो उसकी यादों से भी घबराते हैं। यूं मुंह मोड़ भी लिए ज़माने से तो क्या, हम जिस गली भी जाए उसी शख्स से टकराते हैं। थैंक यू सो मच। We will talk in the end about Pyar Mohabbat and how it ignites poetry and why people write poetry. But for now, let's put our hands together. Come on, come on, come on, come on. I need louder voice. Come on. The next performer is Trisha. Put your hands together for Trisha. So, hi everyone. Hi. So, whatever discussion we were having today, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि my poetry is sort of going to, sum it all up. I know that's your job, but then yeah. So, that girl who spoke about her stretch marks and everything. So, I have written one piece, and I'll just tell you, मतलब प्यार पे ही है, पर काफी अच्छा है। खुशी वाला प्यार है, खुशी वाला प्यार। Yeah. It's called I Love You. प्यार में गिरने फिसलने वालों में से थी मैं। लोग कहते थे प्यार से बढ़कर कोई फीलिंग ही नहीं है, पर इसी गिरने फिसलने से जख्म शरीर पर नहीं दिल पर लगे थे, और अब ये टूटे दिल के नुकीले कांच जिस्म को चुभने लगे थे। जख्म जो मरहम लगाने से भरते नहीं, बस एक झूठी मुस्कुराहट का बैंडेड लगाकर छिपाया करती थी। लोगों के लिए तो मैं ठीक ही थी, पर अंदर से वो दर्द से जूझ रही थी। और हर बार जब दिल टूटता तब एक ऐसे वक्त का इंतजार करती जब हर धड़कन के साथ दर्द नहीं होगा, और कब इस दिल को प्यार नहीं होगा। और वो वक्त आया, तभी ना खुशी महसूस हुई और ना गम, बस था तो तन्हाई का एक सूना आगमन। और इस तन्हाई में जीना सीख ही रही थी कि तुम मेरे जिंदगी में आ गए थे, तो तुम पहले से ही, बस अब नजर में भी आ गए। शायद देख ही नहीं सकी कि जिंदगी की हर ऊंच नीच में तुमने मेरा साथ निभाया, और जब कभी ये पैर थरथराए तुमने मुझे फिर चलना सिखाया। हाँ, तो वो आईने में खड़ी एक खूबसूरत पर नाकाम रिश्तों से थकी हारी एक लड़की देर से ही सही तुम समझी कि प्यार की कमी रिश्ते नहीं, हम खुद मिटाते हैं। और अब खुद से प्यार क्या कर लिया, पिछले रिश्ते फीके नजर आते हैं। अब जाकर आई लव यू इन 3 शब्दों की कीमत समझ आती है। एक वक्त था जब ये 3 शब्द बाजार में बहुत महंगे बिकते थे, अमीर गरीब के अंतर को भुलाकर सिर्फ नसीब वालों को मिलते थे। और अब तो ऐसा लगता है कि ये 3 शब्द भी चाइना से आते हैं। जब तक इनका एहसास हो तब तक तो ये खत्म हो जाते हैं। बेचने वाला भी चिल्ला चिल्ला कर बाजार में प्यार बेचता है, पर असल में तो वो कच्चे धागे से लटका हुआ एक समझौता बेचता है। पर इसी बाजार में एक शांत सी एंटिक दुकान में आज तक मुझ जैसे नसीब वालों को प्यार मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो एंटिक की दुकान मिल जाए,
दूसरों से प्यार मिलना ना सही खुद से ही मिल जाए. Thank you. That was my first piece. And the second thing is I see कि आज बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम परफॉर्मर्स हैं हैबिटेट पे, एंड इट्स अ रियली डेयरिंग थिंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बट देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल स्टक देयर. आप लोग अपने कोई फ्रेंड्स को जानते होंगे जिनको परफॉर्म करना होगा बट दे आर टू स्कैर्ड टू डू इट. एक पॉइंट पे आप भी बहुत यू वर स्कैर्ड टू डू इट. सो दिस इज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. सलाखों के पीछे से उस आसमान को ताकना और फिर उसका सोचना, वहां तक पहुंचना तो सिर्फ एक ख्वाब है. जहां हूं उसमें क्या बुरा है. उसे उड़ने की इच्छा तो थी पर गिरने का भी डर था. वो एक ऐसा परिंदा था जिसे अपने पिंजरे से ही प्यार था. वो एक उम्मीद में जी रहा था. शायद ये पिंजरा भी कभी आसमान बन जाए, पर उस परिंदे की तकदीर में कुछ हासिल करना लिखा था और अपने जुनून को ठुकरा कर वो इस पिंजरे को घर समझ बैठा था. उसे क्या पता उसका घर तो पूरी दुनिया है. एक बार पंख फैलाकर तो देखे, उड़ने को पूरा आसमान है. थैंक यू. एंड द लास्ट पीस, इट्स अबाउट हाउ राइटर्स फेस दैट क्रिएटिव ब्लॉक. मुझे क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आता, मुझे सिर्फ वो राइटर्स ब्लॉक नहीं आता. आई ओनली गेट राइटर्स फ्रीडम. तो मैं 2-3 महीने में खाली 1-2 पोइट्रीज लिखूंगी और वो मेरे लिए फ्रीडम है. एंड कभी कभी वो नहीं होता है बिकॉज आई लव टू परफॉर्म एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू परफॉर्म ऑन स्टेज. सो इट्स अबाउट दैट. खाली पन्नों को अब शब्दों से रंगीन मैं कैसे करूं. लिखती तो मैं अपने जज्बात हूँ, पर जब खुद ही नहीं जानती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ तो इस महफिल में तालियों की गूंज मैं कैसे भरूं. लिखना तो चाहती हूँ क्योंकि इस मंच को अब घर जैसा समझती हूँ. इससे ज़्यादा दूर रहा नहीं जाता. अब तो इस महफिल में बैठे अनजान भी अपने लगते हैं. ज़्यादा कुछ ना कहने पर भी दिल की बात समझ लेते हैं. थैंक यू एवरीवन. So, how's it going, guys? How are we feeling? Are we feeling good? Still liking everything that's going on? Okay, just hang in there with me. We have 2 more performers. All right? And I don't think that's a bad thing. Huh? Come on. I need your energy back up here again. So come on. Energy. Please put your hands together for Manhar. Sorry, Manhar, give me 2 minutes. I just want to say one thing. So I mentioned earlier that at 4 minutes the lights light up in the back. So please be respectful of the time. And yeah, okay. Let's one more. हाय. Too tall. यार एक बार कैमरा चेक कर लो, मैं फ्रेम के बाहर तो नहीं चला गया. Hi, my name is Manhar Seth. I am from Delhi and I like to call myself a शायर. अब हूँ या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है बट कुछ एक आधा शेर और एक छोटी सी गज़ल है जो लिखी हुई है. अच्छा, मैं अपने आप को शायर बोलता हूँ और लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो वो अपने महबूब की गोदी में पहुँच जाते हैं. तो मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, महबूब की गोदी में जहाँ आप जाना चाहते हैं. ठीक है फैजल भाई, यहाँ थ्योरी पे ध्यान देना, प्रैक्टिकल नहीं. ठीक है, मैं अभी दिल्ली में परफॉर्म कर रहा था, वहाँ मैं बोला कि ऐसे लोग अपने महबूब की गोदी में चले जाते हैं, तो 2 लड़के पीछे से उठ के चले गए. तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे हैं सर गोदी. तो मैंने कहा नहीं, थ्योरी में ध्यान देना है. तो एक आधा शेर है और एक फैजल भाई, स्मोकर्स इन द हाउस जो भी हैं सिगरेट वगैरह के आशिक, तो उसके लिए शेर लिखा था. एक लड़की थी, मुझे कहा करती थी कि यार सिगरेट बहुत पीते हो, कम पिया करो. और जब भी मेरी सिगरेट देखती थी ना तो बीच से तोड़ देती थी. मतलब तोड़ देती थी. पैसे तो जो वेस्ट करे, नशा भी वेस्ट करा. तो तब एक शेर लिखा था कि अर्ज किया है, ये गुड ऑडियंस थोड़ा जोर से, हाँ ये बात. तो शेर था कि अर्ज किया है कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट. कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट. मेरे साथ बोलिएगा सिगरेट, आपको मजा आएगा. कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट,
मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए, और मैंने उससे पूछा मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो। कि मैंने उससे पूछा मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, उसने आहिस्ते से कहा मुंह मोड़ते हुए। और ये एक छोटी सी क्योंकि समय थोड़ा कम है तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा पढ़ने की। एक छोटी सी गज़ल है, हाल ही में हुई, नामुकम्मल है। जैसा हमारा इश्क नामुकम्मल है तो गज़ल भी नामुकम्मल है, पर मुझे लगता है कि एक दिन मुकम्मल हो जाएगी, है ना। तो गज़ल के कुछ शेर में, इसका रदीफ है रखे हैं, तो मैं पीछे वालों की भी खास बात चाहूँगा। कुछ ऐसा का अक्सर जो मैं लिखता हूँ ना, वो मैं वाह वाला शायर हूँ, आह वाला शायर नहीं हूँ, ठीक है। नहीं वहाँ नहीं, वो वाला नहीं हूँ। तो ये जो आप कर रहे हैं ना ऐसे वाली, ये मत करिए। मैं चाहूँगा कि सब खुल के वाह करे, क्योंकि महफिल, देखिए महफिल छोटी होती है ना तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो मैं चाहूँगा कि सब खुल के वाह करे, आप बाहर वाले लोगों को भी पता लगे कि ओपन माइक चल रहा है। और ये मानिए आप फैजल भाई, 9 महीने बाद मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, तो हाँ मतलब 9 महीने यार हाँ, बॉम्बे की ऑडियंस थोड़ी नॉटी है। चलो मैं एक शेर, एक छोटी सी गज़ल है, मैं मतलब और चंद शेर मैं पेश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा कहा है, अर्ज किया है, क्या बात है, कुछ ऐसा कहा है कि गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं जो है रदीफ है कि गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं। कि गम तेरे कुछ ऐसे मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं, और अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई जमाने को, और अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई जमाने को, किससे तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं, किससे तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं। और पीपल डोंट नो दिस अबाउट मी दैट आई हैव नॉट डेटेड एनीवन टिल डेट। मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं रही है जो मेरी गर्लफ्रेंड रही है, या जो क्लेम कर सकती है वो मेरी गर्लफ्रेंड रही है। हाँ, आगे जाके फेमस हो गए तो आ जाएंगी 2-4, बट अभी तक ऐसा है कि, तो तब उन लोगों के लिए, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं रही गर्लफ्रेंड, तो मैंने उनके लिए एक शेर लिखा, जवाब लिखा। तो किससे तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं, और तालाब में मछलियां बहुत है मैं जानता हूँ, तालाब में मछलियां बहुत है मैं जानता हूँ, मुझे नहीं जाना पानी में वहां जाल रखे हैं। गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं, और कुछ तेरी यादों के तोते रखे थे मैंने, कुछ तेरी यादों के तोते रखे थे मैंने, आजकल सारे पिंजरे में डाल रखे हैं। गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं। और ये बतौर खास शेर कुछ ऐसा कहा था कि तुम तो कहती थी कि एक दिन छूने दोगी, कि तुम तो कहती थी कि एक दिन छूने दोगी, आज वो दिन है तो कैसे ये सवाल रखे हैं। गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं। और ये राइटर्स की जो है महफिल है, छोटी पोएट्स बैठे हैं, तो पोएट्स को पता होगा कि ख्याल जो है बहुत आते हैं, तो राइटर्स के लिए एक शेर लिखा है कि गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं। एक लड़की थी, क्या करती थी कि यार आप तुम तो बड़ा सोचते रहते हो, तो उसके लिए तब लिखा था कि जितने तुझे ख्याल आते हैं ना, कि जितने तुझे ख्याल आते हैं ना, उतने तो मैंने इन जेबों में डाल रखे हैं, उतने तो मैंने इन जेबों में डाल रखे हैं। और आखिरी शेर, इस गजल का आखिरी शेर मक्ता पेश करा है कि मतलब तुमने बिछड़ते वक्त भी झूठ कहा था, कि मतलब तुमने बिछड़ते वक्त भी झूठ कहा था, अभी शादी को टाइम है मनर, अभी कई साल रखे हैं, अभी शादी को टाइम है मनर, अभी कई साल रखे हैं। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। This is one of the best mics in Bombay. Okay, all right, everyone. Good round of applause for Mana Ayar. Next performer. Keep it going. Next performer, Sanskari. हाय। सो बेसिकली आप सबको मेरी हाय लग गई है, हेलो वाली। सो ऐसा है कि बहुत ऊपर है ना, आवाज़ आ रही है पीछे? हाँ, सो ऐसा है कि मैं शुरुआत करता हूँ सीधा कि हमें गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा है,
हमें गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा है, हमें तुम्हारा ख्वाब दिखाया जा रहा है। हमें गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा है, हमें तुम्हारा ख्वाब दिखाया जा रहा है। हमारी गली भूल कर दूसरी गली जा रहे हो, हमारी गली भूल कर दूसरी गली जा रहे हो। आने जाने में कितना किराया जा रहा है। हमारी गली भूल कर दूसरी गली जा रहे हो। आने जाने में कितना किराया जा रहा है। आने जाने में कितना किराया जा रहा है। और बेवफाई के बाद भी तुम्हें गाली नहीं दी। बेवफाई के बाद भी तुम्हें गाली नहीं दी। महफिलों में आज भी तेरा दामन बचाया जा रहा है। बेवफाई के बाद भी तुम्हें गाली नहीं दी। महफिलों में आज भी तेरा दामन बचाया जा रहा है। और तेरी इश्क की नौकरी करके कुछ नहीं मिलता। तेरे इश्क की नौकरी करके कुछ नहीं मिलता। हाँ, अदब कमाया जा रहा है, शेर कमाया जा रहा है। और एक ऐसा था कि अभी दूसरे रुख की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से रुख है। अभी जो कुछ भी मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ है, ऐसा हो सकता है कि हो रहा हो, या मैं चाहता हूँ मेरे साथ हो, है ना, मैं चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो एक ऐसा है कि इतना गुस्सा ना किया कर जाने मन, इतना गुस्सा ना किया कर जाने मन, उम्र अभी बाकी आ जाने मन। इतना गुस्सा ना किया कर जाने मन, उम्र अभी बाकी आ जाने मन। तेरी चुप मुझे बहरा कर देगी, तेरी चुप मुझे बहरा कर देगी। इससे अच्छा दे दे गाली आ जाने मन। तेरी चुप मुझे बहरा कर देगी। इससे अच्छा दे दे गाली आ जाने मन। इससे अच्छा दे दे गाली आ जाने मन। मैं चांद पे गया था एक टुकड़ा लेने। मैं चांद पे गया था एक टुकड़ा लेने। वहाँ मिल गई तेरी बाली आ जाने मन। मैं चांद पे गया था एक टुकड़ा लेने। वहाँ मिल गई तेरी बाली आ जाने मन। और इश्क अगर खत है तो फिर मैं उम्र भर तेरा डाकी आ जाने मन। इतना गुस्सा ना किया कर जाने मन, उम्र अभी बाकी आ जाने मन। और रकीब मतलब पता है आप सबको, जो इश्क में अपना ओपोनेंट होता है ना, होता ही है। सो ऐसा है कि बहुत नमी है उसके होठों पे, बहुत नमी है उसके होठों पे। मेरे होठों की कमी है उसके होठों पे। बहुत नमी है उसके होठों पे, मेरे होठों की कमी है उसके होठों पे। जहाँ मैं रोज़ अपना माथा टेकता हूँ, ऐसी एक ज़मी है उसके होठों पे। जहाँ मैं रोज़ अपना माथा टेकता हूँ, ऐसी एक ज़मी है उसके होठों पे। और रकीब का नाम होगा कभी, रकीब का नाम होगा कभी, मेरा नाम अभी है उसके होठों पे। बहुत नमी है उसके होठों पे, मेरे होठों की कमी है उसके होठों पे। और एक आखिर शेर कहूँगा कि छोटा सा शायर हूँ, शायरी वारी लिखता हूँ, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा शायर हूँ, शायरी वारी लिखता हूँ। पर आज कहानी सुनाने आया था। तुम सबको लग रहा था ना ये मेरी है, पर मैं तो हमारी सुनाने आया था। इट वाज संस्कारी एंड इट इज संस्कारी, SCAR स्कारी। थैंक यू सो मच। There's one thing, एक चीज़ मुझे बोलनी है। आपका नाम तो है संस्कारी, आपने बात यहाँ पे वैसी नहीं की। क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। Thank you everyone. Once again. Have a round of applause for Sanskar. One important thing to note that after all of this is done, you all can go on Habitat. 2-3 days later, our photos will come up. In the photos, hopefully, our Instagrams will be tagged. Stop करो. जिसको भी जो भी पसंद आया, please मुझे तो कर ही देना stop. Full permission.
follow भी ज़रूर करना. And support your local artists, your fellow artists. And on that note, last performer for the day. So you all know the drill. You all know the drill. Come on. Put your hands together for China. नीचे कैसे होता है? Is it okay? Am I audible? Yes. Okay, just a second. So, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं पहले एक पीस बोलूँगी, फिर टाइम रहा तो फिर दूसरा देखेंगे. तो मेरे पीस का नाम है दिले कातिल महबूब मेरा. ठीक है. सो दिले कातिल महबूब मेरा, बड़ा सच्चा था महबूब मेरा. इतनी प्यारी आवाज़ और मीठे लहजे में बात करता था, वो मुझसे भी ज़्यादा सच्चा लगता था. कि अगर वो दिन को रात कहे तो मैं मान लूँ, खुद को मेरी ज़ात कहे तो मैं मान लूँ. कहे वो ये जहर नहीं पानी है तो मैं मान लूँ कि बस छोटी सी जिंदगानी है तो मैं मान लूँ. कहे वो कि सूरज रात में निकलता है तो मैं मान लूँ कि चाँद किसी दरिया में ढलता है तो मैं मान लूँ. उसके हर झूठ को सच में मान लूँ, चाहे हो जाऊँ मैं खर्च पर मैं मान लूँ. इतना खूबसूरत सा झूठ कहता था वो, इतनी शिद्दत से कहता था. मैं मान लूँ चाँद पे बुढ़िया रहती है, मैं मान लूँ चाँद पे बुढ़िया रहती है, मैं मान लूँ गुड्डे के साथ गुड़िया रहती है. मैं मान लूँ रेत के घर को आशियाना, मैं मान लूँ उसकी बाहों को अपना ठिकाना. मैं मान लूँ वो कहे मुझे अपनी चंदा, मैं मान लूँ. वो कहे खुद को मेरी दुनिया, मैं मान लूँ. वो कहता कभी, इस पे गौर फरमाइएगा, ये सच है कि वो कहता कभी इस वाली उंगली में अंगूठी ना पहनना, इस पे हक मेरा है. मैंने मान लिया, देखो अब तक खाली है. खैर वो कहता था तुम्हारे दिल के दरवाजे में मैंने खुद को अंदर से बंद कर लिया है और चाबी फेंक दी समंदर में. मैंने मान लिया. माँ कहती थी झूठ बोलोगी तो कौवा काटेगा, बहुत से कौवे तलाश में हैं उसकी. अगर मिलेगा मुझसे तो पूछोगी उससे, मिल गई क्या चाबी समंदर से. बड़ा अच्छा तैराक निकला दिले कातिल महबूब मेरा. लास्ट अगर टाइम है तो पीस का नाम है कैसे तुम. मेरे आंचल में रहने की बात करते करते कैसे तुम किसी और की बाहों में सो गए. मेरे हाथों की लकीरों में अपना नाम ढूंढते ढूंढते कैसे तुम किसी और के नाम से जुड़ गए. मेरे नब्ज़ में ज़िंदा रह के कैसे तुम किसी की धड़कन बन गए. मेरे जुल्फ़ों के साए में रहते रहते कैसे मुझे अंधेरों में छोड़ गए. मेरे साथ ख्वाब देखते देखते कैसे तुम किसी की हकीकत बन गए. कैसे तुम इन सवालों को छोड़कर किसी और के जवाब बन गए. थैंक यू. जस्ट अ सेकेंड, एक लास्ट कि फिर से एक ज़ख्मी दिल को तोड़ा है किसी ने, एक शायरा को अपना बनाकर फिर छोड़ा है उसी ने. अपनी दगाबाजी का आगाज़ सरेआम देखेगा वो महफिलों में, कभी मेरी आँखों में कभी मेरी गज़लों में झलकेगा वो, पर अपनी दगाबाजी का आगाज़ सरेआम देखेगा वो. थैंक यू. Such grace. Lovely. बहुत अच्छा लगा सुन के. So, that was the last performer for the day. All right, guys, on that note, please come to more poetry open mics. Habitat has these on Sundays at 2 p.m. and Mondays on 7 p.m. If you want a slot, you comment on the post, and if you get selected, the team will DM you and let you know. And if you want to keep talking to me, please come to more of these mics. So with that, you all have been a lovely audience. Thank you. Thank you.